Assalamu alaikum dear students. In this video lecture, I'll be demonstrating how to write a Hello World Java program and what's the setup environment required for the same. Let's begin. First of all, I hope that you have gone through the material that was provided to you on the WhatsApp group. If you haven't, please go through the same. Look, regarding Java, uh, let's open a window first. Java okay, yeah, Java is a programming language, high-level programming language. First, it was used in mid-90s. First, it was used in mid-90s, around 1995. So I have provided the material. Please go through that, and uh, read more about the history of Java programming language. What is the advent of Java programming language? What was the need? And finally, how it has evolved from the point in 1995 to today. What have been the changes? How it has revolutioned the programming world. I'll tell you, Java is one of the most important programming languages, computer programming language. Now, in this group, we have uh, IT students, third semester. We have third sem IT, and we have fifth sem computer applications. I'm sorry, it is fifth sem IT only. So the group is meant for the students of Femina College. I mean the WhatsApp group, and the students from IT stream. We have information technology as one of the subjects, not this. They have different syllabus. They have different syllabus. Okay. Now, having said this, I have provided some material last time, so please go through that material. In this demonstration, one thing I will add here is we said Java is a high-level language, high-level programming language. Second, Java is
an object-oriented programming language. Now, in your third semester, that's what I want to say. Third semester, you have studied C++, and in second sem, you studied C programming. C, then C++. Now, C++ is an object-oriented programming language. That means the concepts, the OOP concepts rather, object-oriented programming language concepts will be same. Concept is a concept, irrespective of what programming language you use, what programming platform you use. So, why I say this? I mean, the basic important concepts like what? Abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. The concept is same, the fundamentals are same. Now there's matter of syntax. You have to learn Java syntax. So I'm giving you 2 more days to revise what you had learned in C++, make a revision, a thorough revision of the concepts. So from that experience, you won't have a tough time in this subject. It's all about syntax and syntaxisms to some extent, C++, and C Sharp and other language. Okay, like the looping structures, for loops, while loops, and conditional logic like if else. The syntax is same as C language, C++ language. But there are obvious differences also that we will be going to learn. So here the important point is Java is an object-oriented programming language. You have to revise the OOP concepts. Now, having said this, as said in the beginning, I'm sorry, there's some problem in my throat today. Here we will demonstrate how to write a welcome program or hello world program in Java. What are the prerequisites? What is the environment? I mean programming environment, machine environment, platform, and how to set up your machine for executing Java programs. We'll do a hands-on for that. Now, first of all, what you need when you talk about Java, you have you must if you are a Java, there are two scenarios. One is use Java applications on your system, or another is you are a Java developer. If you happen to be a Java developer like in this course, so to develop Java applications, standalone desktop applications, our focus will be to learn core Java. Core Java. So there are various variants of Java like Java for Android, Java for web applications, web services, and many more. But first of all, irrespective of which way you'll be using Java, you need to have basic core Java concepts. So here we'll be learning the syntax of Java, core Java concepts. In this course, we'll be developing some desktop applications for Java. Now, what we need to start, first of all, you need to have Java. What happened?
Java SDK, JDK, sorry, JDK. You have to download Java Developer Kit. For Windows 10, I'm using Windows 10. If anybody of you younger you is using Linux, you has to download JDK for say operating system. Now we'll be revising these concepts over and again, so don't be panicked if you think that you are not getting the concept. Nothing like that. We'll have a lot of time here, spend a lot of time in this course. It's around a 3-4 months course, so be patient. JDK download for Windows 10. It will take you to a site, this oracle.com. Java Standard Edition downloads here. Okay, JDK download. Now, the JDK includes tools useful for developing and testing programs written in Java programming language and running on the Java platform. Okay, so you will see your operating system. In my case, it is simply Windows 64 installer. You'll download this. I have already downloaded this on my machine. You'll download this if you happen to be a Windows user. Basically, what JDK is, it is a developer platform. It's an APIs, classes, pre-written code, class libraries, the environment for development Java applications, and also the runtime. So you'll download that. Once you have downloaded, there are two things. One, running a Java application, another developing. If you just want to run the Java application, then you just need to install Java Runtime Environment, JRE, Java Runtime Environment. Java Runtime Environment, if you want to run only, if you want to run Java programs but not develop them, download the runtime. Okay, execution engine of Java. If you want to develop your Java programs, then you have to download what? JDK, Java Developer Kit package. Okay, from the Oracle site. Oracle is the what company that owns the product Java. After downloading, what you have to do, what you have to do will simply write a Java program. Simply write a Java program. Before that, there is one more step that's called setting the path variable. That I will come back to later. Now, but please do remind me tomorrow's lecture what was that path variable about. Setting the environment path variable. Okay, now what I will do, I will simply open a Windows file. Okay, let's show you this way. Now C drive, program files, and Java. This folder will be there if you have installed what? This package, this software, Java SDK, Java JDK डेवलपर किट. ठीक है, ये वाला जब आप इंस्टॉल करेंगे JDK, उसके बाद ये वाला फोल्डर, you will find this folder here on your path chosen that contains the bin and all that applications. Now what we'll be doing, okay, we'll write
a hello world program in Java. This is like that. As I told you earlier, Java is what? Java is an object-oriented programming language. देखिए, this is our first program. Let us do one thing. Let us do it ourselves. I'll show you first, then I will write the same program. Okay, so there is a class is there, and the name of the class is hello. In Java, everything is class and objects. You have to deal with class and objects. It's a pure object-oriented programming language. Now, a brace for class. In this class, we have one main entry function. That is your main function. Main function, like in C, C++. But it has to be the main entry point of the program. Okay, it's here static. What do you mean by static? For now, just ये समझ लीजिए कि static हम यूज कर रहे हैं कि एज ए सेट क्लास बनाना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं, जैसे C++ में आप क्लास बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। Now here, if you have some function static functions, that means it is not dependent on creation of objects. So same is the point here. We are using the main function, that is static main function, public static main function, without any this return type. Okay, now what we do here is we print, जैसे आप करते थे C में printf या C++ में C out, अगर आपको याद है C++ C out, तो यहाँ पर क्या करना है, import system.out.println. system is a mother namespace और पैकेज होती है इसमें जावा में। बाय डिफॉल्ट ये पैकेज कुछ भी नहीं है, क्लासेस है, लाइब्रेरी है, ठीक है, फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी अवेलेबल है जावा प्रोग्राम्स के, जो हमने जेडीके डाउनलोड किया उसी में पैकेज कुछ है जो हम पैकेज यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम, बिकॉज वी वॉन्ट बी राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कुछ प्री रिटन जैसे सी में लाइब्रेरीज है, मैथ लाइब्रेरी और बहुत सी लाइब्रेरीज है, वो हम यूज करते हैं, रीयूज करते हैं। ऐसे सेम इज ट्रू अबाउट जावा, देयर आर लॉट ऑफ पैकेज देयर, वी हैव टू रीयूज, वी वोंट राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। So system out is a class in this package, and println is the function in this what class out. Println is the static function there because we don't have, that is why we don't create any object of this out class if we what call this println function. ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, उसमें हमने पैरामीटर पास किया वेलकम टू जावा। टर्मिनेटर जैसे सी में C++ में, वैसे यहाँ पर भी फंक्शन को ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हियर। इसमें एक पैरामीटर है दैट इज स्ट्रिंग आर्ग्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है। सो एक सिंपल जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लास नेम, modifier, it can be public private class, for now it's a public class, name of the class. Now this name of the class has to match the name of your file if the class is public. So hello and the name of the file, when you save this file with the extension .java, the extension of java file with .java, java program का extension होता है .java, C का .c, C++ का .cpp। C भी आपने पढ़ा है, C++ भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सिंटेक्स पे गौर करिए। तो
क्लास ये स्ट्रक्चर है एक बेसिक जावा प्रोग्राम का, एक हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम का, एक वेलकम प्रोग्राम का, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पर, वेलकम टू जावा। जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट एक दो दिन आप क्या करेंगे, सी प्लस प्लस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वो सिंटैक्स आपको यहाँ पर काम आएगा। इफ एल्स सेम है, डिक्लेरेशन जैसे इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते, डेटा टाइप्स, वो सारा कुछ ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है, ठीक, वो नॉलेज आपको यहाँ पर काम आएगी। तो नाउ इज पब्लिक क्लास क्या होना चाहिए, हेलो, जो आपने यहाँ पर क्लास का नाम रखा वही आपकी फाइल का भी नाम रखना होना। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग आप करते हैं किसमें, टर्बोसी कंपाइलर में, जावा के भी बहुत से लिप्स है, बहुत से है, ब्लूजे है, नेटबीन्स है, बहुत से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स है जिनमें आप कोड लिखेंगे। लेकिन जावा सीखने के लिए कुछ दिनों के लिए हम सिंपल सिंटैक्स लिखेंगे विदाउट एनी इंटेलिजेंस, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम आईडीई। लेकिन जब हम बड़े से जावा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसे एंड्रॉयड ऐप या वगैरह, उसके लिए जरूरत होती है एंड्रॉयड स्टूडियो की, वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। या जावा का कोई कोड लिखना है आपको, नोटपैड में लिखना मुश्किल हो जाएगा, सिंटेक्स रिमेंबर रखना, तो हम आईडीज यूज करते हैं। जैसे टर्बोसी कंपाइलर एक टर्बोसी प्लस बेसिक्स आईडी है, ऐसे ही विजुअल स्टूडियो है, विजुअल कोड है, विजुअल बेस डॉटनेट जिसमें कंपाइलेशन होती है, या प्रोग्राम डेवलपर एनवायरनमेंट है उसके लिए, डॉटनेट के लिए। तो जावा के लिए भी नेटबीन्स है और बहुत से है जो हम इंस्टॉल करेंगे, जिनमें हमारा कोड लिखना, कंपाइल करना, एडिट करना, वो सारा कुछ आसान हो जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट बनाना जावा का आसान, ऐसे नोटपैड में वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लर्निंग के लिए कॉन्सेप्ट, ये बेसिक सिंटैक्स रिमेंबर याद रखने के लिए और सीखने के लिए कुछ दिनों के लिए हम सिंपल विदाउट एनी आईडीई यूज किए बगैर नोटपैड यूज करेंगे। We'll be using Notepad to learn the syntax fundamentals of Java. So, having done this, what I wrote here, class name, public modifier, class name, then brace here, the class boundary of this class, and there is only one function, एक इस क्लास में अभी एक ही फंक्शन है इसकी हमें जरूरत पड़ती है, that is this main function, entry point of this code. It has to be static because Vanaf will not be the object of this class. Static functions वो होती है जिनको आप मतलब क्लास ऑब्जेक्ट irrespective of क्लास ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम पैकेज है system.out.println वेलकम टू जावा, जैसे आप सी में करते हैं printf cout वगैरह। जावा का कॉन्सेप्ट हुआ पैकेज का। पैकेज कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है। कुछ पैकेज आप अपनी यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं, कुछ हमें अवेलेबल है जावा में। ओके, अब नेक्स्ट जॉब है हमारा, हमने इस फाइल को सेव करना होता है किससे, नॉट टेक्स्ट फाइल बट एज व्हाट, बट एज ए जावा फाइल, hello.java, ऑल फाइल्स। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं ये नो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ना कि जावा प्रोग्राम। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप ये सेव करेंगे, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यस, प्लेस इट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कंपाइल दिस प्रोग्राम। अगर आप जावा यूज करना चाहते हो, यानी फाइल कहीं पर भी है आपके सिस्टम पर, चाहे सी ड्राइव में है, डेस्कटॉप पर है, माई डॉक्यूमेंट्स में आप इसको कंपाइल, Java should be able to find it, then you have to set the path variable, ठीक है। ओके, वो कैसे, जैसे यहाँ पर, अदरवाइज आपको अपने जावा प्रोग्राम्स यहाँ पर कंपाइल करने होंगे इस फोल्डर में, आई मीन टू से हियर, ये यहाँ पर अपनी जेल की बिन, ये वाला फोल्डर, ये वाला पाथ,
यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम्स रखने हैं। अगर आप अपना एनवायरनमेंट सेट नहीं करते, अगर आप अपना जावा पाथ मशीन पर सेट करते हैं, तो कहीं पर भी अगर जावा फाइल है, सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, डेस्कटॉप पर आप कंपाइल कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। वो एनवायरनमेंट पाथ कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने वो हेलो डॉट जावा यहाँ पर कॉपी की। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है जिसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अब है यहाँ पर ये फाइल हेलो डॉट जावा, हमने कॉपी किया। अब देखिए इसको कंपाइल कैसे करना है। इस फोल्डर का पाथ मैंने कॉपी किया। Now I will go here and open command prompt. I repeat here, यूजुअली जब आप जावा का प्रोग्राम, जावा का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप यूज करते हैं, जो आपको फैसिलिटेट करता है जावा कंपाइल करना, रन करना, एडिट करना। लेकिन to have a better understanding of the syntax, to learn, to remember the syntax, for some days we'll be using Notepad only. Command prompt open किया, run as administrator, run as administrator. Now I'll do something. cd, okay, C drive पर वापस आ गया मैं। अब चेंज डायरेक्टरी, अब मैं, ये मेरा पाथ था, C drive प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK, जहां पर बिन फोल्डर है जावा का। यहाँ गए, उसके बाद कंपाइल करना है जावा प्रोग्राम। हाउ? we have to invoke the Java compiler. Java C says command to invoke the Java compiler. Again, if you have IDE installed, you have the IDE will do it for yourself. ठीक है, NetBeans एक IDE है। जैसे आप एग्जाम्पल है यही, जैसे आप टर्बो C++ यूज कर रहे थे, ऐसे ही आईडी है, बहुत से पावरफुल आईडी है जावा में। नेटबीन्स है, लिप्स है, वो हम यूज कर सकते हैं, जिनमें जो हमारे लिए कंपाइलेशन, एडिटिंग वगैरह, सिंटैक्स इंटेलिजेंस का काम करेंगे। लेकिन फॉर नाउ वी यूज नोटपैड ओनली। जावा सी इन्वोक हो गया, जावा कंपाइलर। नेम ऑफ द फाइल इज hello.java is the name of the file that I want to compile. अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद क्या होता है, एक फाइल बन जाएगी आपके फोल्डर में, ये वाली देखिए, hello.class। दिस इज एन इंटरमीडिएट फाइल, बाइट कोड। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर, मतलब प्रोसेस क्या होता है, हाउ, मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम, व्हाट आर द स्टेप्स in executing a Java program, a Java file। जावा प्रोग्राम रन जब होता है तो ये वाली जो बाइनरी फाइल बनी, जो हमारी ये इंटरमीडिएट फाइल बनी, जिसमें बाइट कोड है, कॉन्सेप्ट है जावा में बाइट कोड का, इंटरमीडिएट कोड का, ये डायरेक्ट मशीन कोड नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो की जावा कंपाइलेशन कैसे होता है, और how it solves the problem of Java portability। जो ये Java प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, Java लैंग्वेज है, ये पोर्टेबल है, यानी अगर आप Java प्रोग्राम विंडोज पर लिखते हैं, वही प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो लिनक्स को, यू डोंट हैव टू चेंज द कंपाइलर। कंपाइलर आपको यूज नहीं करना है, खाली एक चीज जो रन टाइम है, जब आप इंस्टॉल करोगे इस सिस्टम में जावा रन टाइम, विंडोज के लिए एक सेटअप है, उसके लिए दूसरा सेटअप है, बाकी कंपाइलर यू डोंट हैव टू चेंज द कोड। तो ये पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये बाइट कोड क्या होता है, पोर्टेबिलिटी क्या होती है, ये हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस है जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और रन करते हैं। ठीक है, तब नेक्स्ट, ओके, अब हमें रन करना है, उसके लिए कमांड है जावा, ओनली जावा, नॉट जावा सी, एंड प्रोग्राम नेम दैट इज हेलो डॉट जावा। लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज डॉट जावा इज ए सोर्स कोड। हमें अभी बाइट कोड वाली फाइल इन्वोक करनी है, क्लास वाली।
we'll write Java hello. ये run हो रहा है program. Successfully, we have been successful in executing our first Java program. Congratulations. The machine is welcome to Java. So now I want you to, what you'll do, you will follow the steps. You'll rewind this video, you'll watch this video again and again. Hopefully you'll find better material on internet, browse how to how to write a hello world program in Java, what are the steps in executing your Java first Java program, what is the environment that has to be set, ये सब चीज़ें देखिए. बाद में कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा नेक्स्ट पेज में क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह. आई होप कि यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में मटेरियल दिया है वो भी आप देखिए. और बीच में हमें क्या होगा, हम कुछ इंटरेक्टिव सेशंस भी करेंगे, जैसे वीकली वीडियो अपलोड्स भी होंगे प्लस इंटरेक्टिव सेशंस भी होंगे उसमें टीच में ऐप पे. थैंक यू एवरीवन.